Hello everyone, very good evening. Welcome to the YouTube channel of Pratham Test Prep. My name is Hema Chaudhary and in this session we will going to cover the current affairs from 16th September to 21st September. Now when we talk about important current affairs from 16th to 21st September, right, so we will be talking about the most highlighted issues and those current affairs which are important from the examination point of view. Let's just quickly start that, right. So first, news related to these 5 days is, and it is here on the screen. So when we talk about the first important news that we have here is about an important day. And when we talk about important days, right, I told you earlier also that you need to focus on three main things whenever we have any news related to important days. First is the day which is observed. Second is the date on which it is observed, and third is the theme, and fourth can be any other important things related to that particular news. So now if we talk about the first important news, it is about an important day, and that day is International Day for the Preservation of the Ozone Layer, right? And when we talk about this day is observed every year on 16th September. This day is observed every year on 16th September, and this day is also known as World Ozone Day. So we can say that World Ozone Day or International Day for the Preservation of the Ozone Layer, this day is observed every year on 16th September, right? And why this day is observed? So basically this day is observed to create awareness about the importance and the need of ozone layer, which protects our earth against the UV rays coming out from the sun. Now when we talk about these kind of current affairs, you need to always relate current affairs with the static GK facts. Now when we talk about static GK facts, यहाँ पे we can relate it to atmospheric layers, and you should know that when we talk about ozone layer is a part of which atmospheric layers. So when we talk about atmospheric layers, we can say that ozone layer is a part of stratosphere, or we can say that ozone layer is present in the stratosphere atmospheric layer, right? Now third point जो मैंने आपको कहा था, that along with the day and the date you need to focus on the theme of that day, right? So theme क्या थी? So when we talk about the theme for the year 2022, the theme was Global Cooperation Protecting Life on Earth. Global cooperation on protecting life on Earth. So you need to remember these 3 to 4 facts. I'm repeating all the facts again. First is the day. Day is World Ozone Day or the International Day for the Preservation of Ozone Layer. This day is observed every year on which date? So this day is observed every year on 16th September. The theme for that day was Global Cooperation Protecting Life on Earth. And static GK information related to this particular news is, when we talk about ozone layer is a part of which atmospheric layer? Then the answer is stratosphere. So you need to focus on these pointers related to, an important and news related to the important days. देखते हैं हमारी अगली news. So the second news that we have for today's session is USAID, which is also known as US Agency for International Development, UNICEF, right? So when we talk about UNICEF, we all know that this is one of the important international organization. इन दोनों ने मिलके क्या लॉन्च किया है? They launched a दूरदर्शन series, and along with that they also launched a YouTube series with the title दूर से नमस्ते. With the title दूर से नमस्ते, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे. So when we talk about this दूर से नमस्ते campaign, हम ये कह सकते हैं campaign, या आप इसको normally कह सकते हैं that it is a series on दूरदर्शन and it is a series on YouTube. So basically ये क्या है? ये एक edutainment initiative है. क्या है ये? ये एक एड्यूटेनमेंट सीरीज है. जब हम एड्यूटेनमेंट सीरीज की बात करते हैं या इनिशिएटिव की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशिएटिव विच इज बेस्ड और डेवलप्ड इन एन एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन फॉर्मेट.
राइट. सो इट इज़ बेसिकली अ फिक्शनल हिंदी सीरीज जिसको कि डेवलप किया गया है ऑन एजुकेशनल पर्पस एंड एंटरटेनमेंट पर्पस, जो क्या हाईलाइट कर रहा है, विच इज़ बेसिकली हाईलाइटिंग दी challenges of the post pandemic world and it also promotes the adoption of the healthy behavior, right. अब इसमें याद रखने वाला क्या है, आपको पहला तो नाम याद होना चाहिए. द नेम ऑफ द सीरीज इज दूर से नमस्ते, राइट. कहाँ पे लॉन्च की गई है ये सीरीज? सो ये लॉन्च की गई है दूरदर्शन एंड यूट्यूब पे. सो इट इज़ अ यूट्यूब सीरीज एंड अ दूरदर्शन सीरीज विद द नेम दूर से नमस्ते. कहाँ हुआ फंक्शन जहाँ पे इसको लॉन्च किया गया? सो इट वॉज हेल्ड एट न्यू दिल्ली. किसने लॉन्च किया? सो एक नाम है आपका USAID विच इज़ यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड सेकेंड है आपका यूनिसेफ. नाउ यूनिसेफ की जब हम बात करते हैं, आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, राइट. एंड यहाँ पे अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो आपको जो मेन चीज़ें पता होनी चाहिए वो है पहला हेडक्वार्टर. सो आई एम राइटिंग इट हियर that when we talk about the headquarter of UNICEF, right, the headquarter of UNICEF is at न्यूयॉर्क. वहीं पे जहाँ पे यूनाइटेड नेशन एंड इसके जो मेन चीफ ऑर्गन्स हैं उन सबका हेडक्वार्टर है, एक को छोड़ के ऑब्वियसली ICJ, राइट. सो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है. एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दी सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू यूनिसेफ, दैट इज द फुल फॉर्म. सो आपको पता होना चाहिए यूनिसेफ इज नथिंग बट दी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, राइट. सो आपको ये पॉइंटर्स याद होने चाहिए. Now, when we talk about the, pointers, or if we revise the important pointers related to this particular news, so I'll do it very quickly. So, किसने launch किया? USAID, which is United States Agency for International Development, and UNICEF, right? इन दोनों ने मिलके क्या launch किया? एक series. कहाँ पे लॉन्च की? दूरदर्शन एंड यूट्यूब पे. सो इट इज़ अ दूरदर्शन एंड यूट्यूब सीरीज एंड टाइटल क्या है? दूर से नमस्ते. एंड दिस लॉन्चिंग फंक्शन वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली. सो आपको ये याद होना चाहिए. स्टैटिक जीके फैक्ट कैन बी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ. सो हेडक्वार्टर इज एट न्यूयॉर्क. सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ. एंड द थर्ड न्यूज़ फॉर टुडेज सेशन इज, एज यू कैन सी इट हियर, द न्यूज़ इज रिलेटेड टू वाराणसी. Right, and why this is important? Because when we talk about Varanasi, it has been declared the first ever SCO tourism and culture capital for 2022-2023. So पहली बार SCO stands for Shanghai Cooperation Organization. You can see that on the screen also. SCO stands for Shanghai Cooperation Organization. So SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल पहली बार अनाउंस हुआ है. किसको डिक्लेयर किया गया है? वाराणसी को. किस ईयर के लिए? 2022-2023. सो टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बाय SCO फॉर द ईयर 2022-2023 इज वाराणसी. आपको ये याद होना चाहिए, राइट. सो वाराणसी इज द फर्स्ट एवर, पहली बार कोई कैपिटल डिक्लेयर किया गया बाय SCO. सो इट इज़ द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द ईयर 2022-2023 एंड ये इसने अनाउंस किया था अपनी 22nd मीटिंग में, या आप बोल सकते हो 22nd मीटिंग ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, राइट. कहाँ पे हुआ था ये हुई थी उज्बेकिस्तान के समरकंद में. तो आप उज्बेकिस्तान याद करोगे तो भी चल जाएगा. एंड दिस डेवलपमेंट वॉज कन्फर्म्ड बाय द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, राइट, विनय क्वात्रा. तो आपको ये पॉइंटर्स याद होना चाहिए. मेन किसको अनाउंस किया गया एज द कैपिटल? द आंसर इज वाराणसी. किसका कैपिटल? SCO, राइट. जस्ट अ सेकेंड. SCO का ट्रैवल एंड टूरिज्म कैपिटल. सो लेट मी राइट दैट फॉर यू, राइट. सो टूरिज्म एंड culture capital ever SCO tourism and culture capital for the year 2022-2023. एंड कहाँ हुई थी ये समिट? राइट, SCO समिट जिसमें कि इसकी अनाउंसमेंट की गई थी. इट वॉज हेल्ड एट उज्बेकिस्तान, राइट. सो इट वॉज हेल्ड एट उज्बेकिस्तान. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. सो नेक्स्ट न्यूज दैट वी हैव हियर इज that Gautam Adani became the world's second richest man, right? So Gautam Adani became the world's second richest man by overtaking Jeff Bezos. One of the most important news of the week, or I'll say one of the most important news of this month, right? So when we talk about world's second richest person now, world's second richest person now is गौतम अदानी. यानी इन्होंने किसको रिप्लेस किया है?
इन्होंने रिप्लेस किया है जेफ बेजोस को. सो आपको ये याद रखना है दैट हु बिकेम द सेकेंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन नाउ, गौतम अडानी. एंड किसको रिप्लेस करके, वो जरूर याद रखना है, बाय रिप्लेसिंग जेफ बेजोस. सो ये किस मैगजीन के अकॉर्डिंग है? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू फॉर्ब मैगजीन which has released the real time billionaires list. And according to this list, when we talk about Adani Group's chairperson or chairman, an Indian billionaire Gautam Adani, right, he became the second richest man in the world. Earlier he became the richest person in India and in Asia by replacing Mukesh Ambani, and now he became the second richest person in the world by replacing Jeff Bezos, right. And इन्होंने किसको सरपास किया? अभी मैंने आपको बताया, Amazon के फाउंडर, राइट, जेफ बेजोस को. एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, बिकॉज अगर न्यूज में हम बात कर रहे हैं सेकंड की, तो टॉप पे कौन है आपको वो भी पता होना चाहिए. सो वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इज एलॉन मस्क, टेस्लाज ओनर एलॉन मस्क, राइट, इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन. सो आप ये कह सकते हो, अगर हम रैंकिंग की बात करें, सो रैंकिंग में फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है एलॉन मस्क. And if we talk about second position पे we have Gautam Adani, right. And इन्होंने किसको replace या surpass किया था? So he surpassed Jeff Bezos. जेफ बेजोस किस कंपनी से बिलोंग करते हैं? Amazon. And when we talk about Elon Musk, he owned which company? Tesla and many more others, right. So when we talk about this particular thing, आपको ये याद रखना है that third पे कौन है? And third पे है Bernard Arnault, right. This person is on the third position in this list. And when we talk about Gautam Adani, आपको ये याद होना चाहिए that in the month of February 2020, Gautam Adani overtook Mukesh Ambani to become the richest person in India and in fact richest person in Asia. So these are the main pointers related to this particular news. So आपको ये याद होने चाहिए, and this is one of the important news related to your exams preparation. So please focus on these type of pointers in any news. Right now, next news that we have here is about Cheetah rehabilitation project introduced by or launched by Prime Minister Narendra Modi. So now when we talk about Prime Minister Narendra Modi, right, he launched world's first Cheetah rehabilitation project on his birthday. आप सबने ये इंस्टाग्राम पे या दूसरे सोशल मीडियाज पे ज़रूर देखा होगा इससे रिलेटेड वीडियो या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने बर्थडे वाले दिन, राइट, ऑन 17 सितंबर 8 वाइल्ड चीताज को रिलीज किया. सो नरेंद्र मोदी रिलीज्ड 8 वाइल्ड चीताज इन विच नेशनल पार्क? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है. किस नेशनल पार्क में किया? कूनो नेशनल पार्क. सो स्टैटिक जीके क्वेश्चन हो सकता है कूनो नेशनल पार्क is situated in which state of India? So in that case आपको आंसर करना है, आंसर is Madhya Pradesh. So you need to focus on these type of pointers, right. So Prime Minister Narendra Modi released how many cheetahs? 8. कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में. एंड ये चीताज कहाँ से लाए गए थे? दीज चीताज हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम नमीबिया. यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्री ऑल्सो जहाँ से इनको लाया गया. एंड दे आर बीइंग इंट्रोड्यूस in India under a project called Project Cheetah, right, which is world's first intercontinental large wild carnivore translocation project. ये world का पहला first cheetah rehabilitation project है. So you need to focus on this particular thing. And when we talk about additional pointers related to this, so cheetah was declared extinct from India in the year 1952. Another static GK fact जिस पे कि आपको फोकस करना है, राइट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2000, right, 26 in 2014 to 2967 in 2018. Right, okay, so these were the important pointers related to this particular news. Let's move on to the next important news. And when we talk about this particular news, this is related to cryptocurrency. In fact, this is a news related to the ranking related to crypto adoption. So क्या है ranking का topic? Topic is Global Crypto Adoption Index 2022. क्या index है, क्या ranking है?
इट इज ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022, जिसमें रैंक ऑफ इंडिया इज व्हाट, 4th। आपको यहाँ पे फोकस करना है दैट वेन एवर देर इज अ न्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल रैंकिंग, आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। वन इज इंडियाज रैंक, दैट व्हाट इज इंडियाज रैंक। सेकेंड इज टॉप रैंक कंट्री, राइट, कि टॉप रैंक कंट्री कौन सी है। एंड तीसरा होता है इन सम ऑफ दी रैंकिंग्स कि किसने रिलीज किया इन दीज काइंड ऑफ रैंकिंग, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट। सो रैंकिंग का टाइटल क्या है, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, रैंक ऑफ इंडिया इज 4th। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉप रैंक कंट्री है वियतनाम, राइट। सो आपके ये पॉइंटर्स यहाँ हो गए। रैंकिंग क्या है, रैंकिंग है आपकी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। सो मेन पॉइंटर्स मैंने आपके लिख दिए हैं। इंडेक्स इज ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022, इंडिया की रैंक इज 4, टॉप रैंक कंट्री इज वियतनाम। सो 2022 के ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन रिपोर्ट में जो अगर हम बात करें सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर में जो अभी रिलीज हुई है, उसमें वियतनाम ने दूसरी बार फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। सो वियतनाम रैंक फर्स्ट इन द क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन, विच इज फॉलोड बाय फिलीपींस, देन फिलीपींस है आपका सेकेंड पे, यूक्रेन इज एट 3rd एंड इंडिया इज एट 4th। सो आपको ये देखना है दैट इंडिया की जो रैंकिंग है इट इज above the ranking of United States, UK and Russia, which suggests that हमारी जो इंडिया की क्रिप्टो कम्युनिटी है it is not far behind in pushing for the further use of this technology, right? So आपको mainly ये pointers इसमें याद रखने हैं। Let's move on to the next important news, and next important news is about sports, जो है that when we talk about Bajrang Punia became the first Indian to win 4 medals at World Wrestling Championship। ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने 4 मेडल जीते हैं at the World Wrestling Championship। So Bajrang Punia became the first and the only Indian to claim 4 medals। How many medals? To claim 4 medals कहाँ पे, at the World Wrestling Championship by clinching a bronze in the current edition, right? So बजरंग पूनिया अगर हम बात करें उनका ये तीसरा ब्रॉन्ज मेडल था एट दी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। सो हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले इन्होंने कब जीता था, इससे पहले इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन 2013, एक सिल्वर मेडल जीता था इन 2018, ब्रॉन्ज मेडल जीता था फिर से इन 2019 एंड इसके अलावा फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन 2022। So these are the 4 medals that he won and he became the first and the only Indian to win 4 medals at World Wrestling Championship। इसके अलावा अगर हम बात करें विनेश फोगाट की, so विनेश फोगाट won her second World चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल इन विमेंस 53 kg कैटेगरी। तो आपको नाम ज़रूर याद होना चाहिए, कौन सा मेडल जीता अभी रिसेंटली वो याद होना चाहिए, राइट, 2022 में। इससे पहले टोटल मेडल्स कितने जीते हैं आपको वो पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग द करंट वन, द रीसेंट वन 4 मेडल्स, एंड इन 4 मेडल्स को कब और कौन सा जीता वो याद होना चाहिए, विच इज़ रिटन हियर, राइट। ब्रॉन्ज इन 2013, silver in 2018, bronze in 2019, and again bronze in 2022. So these are the important pointers related to this particular news. Let's move to the next news, and the next news again is a sports news which states that ICC, which is International Cricket Council, it confirmed the venues for the finals of World Test Championship editions of 2023 and 2025. So 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ होगी, इसका वेन्यू डिसाइड हो गया है, राइट। एंड 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ होगी, वेन्यू क्या होगा वो डिसाइड हो गया है, राइट। किसने डिसाइड किया है, आईसीसी हैज़ डिक्लेयर्ड इट, राइट। सो अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दैट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन 2023 विल बी प्लेड एट दी ओवल इन लंदन। कहाँ पे होगा, लंदन में। सो 2023 का फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विल बी हेल्ड एट लंदन। And if we talk about 2025, so 2025 edition to take place at Lords, right? ये कहाँ पे होगा,
लॉर्ड्स. सो आपको ये पॉइंटर्स याद होने चाहिए दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लंदन में होगा, 2025 वो लॉर्ड्स में होगा, राइट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आईसीसी नाउ यू शुड रिमेंबर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रिलेटेड टू इट. First is, where is the headquarter of ICC? So you should know that where is the headquarter of ICC. The headquarter of ICC is at Dubai. The headquarter of ICC is at Dubai. इसके साथ you need to remember the name of the president of ICC, right? So when we talk about the head of ICC, International Cricket Council, International Cricket Council के head हैं Greg Barclay. So you need to remember these two pointers, right? And when we talk about the other important news, तो आप इससे BCCI को relate कर सकते हो. BCCI के head कौन है? Who is the representative of BCCI at ICC? ये सारे जो pointers हैं आप इनको relate करके भी यहाँ पे cover कर सकते हो. So these are the important pointers related to this particular news, and this was the last news for today's session. And with this we can end the session, right? And if you like the session, if you like the way that we are covering the important pointers in our current affairs, so please like the video, share the video, subscribe the channel, and most important, don't forget to press the bell icon to get more notification about the upcoming videos. Bye everyone. Bye bye. Take care. Stay safe, stay healthy, and most important, keep revising.